initially started with some trading business. Right. तो जो foreign companies है उसके, we were the authorized representative for them. And उसके अलावा कुछ मतलब products है जो हम यहाँ पे assemble करके हमारे brand से बेचते हैं. 95% to 98% are imports. क्योंकि हमारा US है, इटली है, जर्मनी है, चाइना है. तो wall automation के Wall automation. completely उसके लिए. वो एक अच्छा भी लगता है जब कस्टमर फीडबैक देता है कि आपके सॉफ्टवेयर की वजह से लाइक थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड या ये हो रहा है. ट्रांजैक्ट इज डूइंग गुड. rather प्रॉब्लम्स ऐसे है ही नहीं कुछ. रीपैकेजिंग भी होता है और असेंबली होता है. तो स्पेयर पार्ट्स काफी जगह से आते हैं. वो 4-5 पार्ट नंबर मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है. तो वहाँ पे थोड़ा प्रोडक्शन मॉड्यूल यूज होता है. हाँ, वहाँ पे यूज होता है. बट मेस्कॉन में हमको प्रोडक्शन मॉड्यूल नहीं लगता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी यूज इट. It has sorted out. पहले मतलब to be honest, I would say like even from day one we didn't have much problem as such. So yes, obviously we are satisfied. But if you ask us to rate your growth, we are quite satisfied. So growing is one part, but maintaining that growth is again very important. So I would say we are completely satisfied with that thing. मतलब जो कांस्टेंट सपोर्ट आपके टीम की तरफ से मिलता रहता है ओवर लास्ट लाइक 5-6 इयर्स और सो. वी वर स्टार्टअप. तो हमको भी क्या था कि बहुत कुछ पता नहीं था. इवन वी वर टेकिंग बेबी स्टेप्स. तो उस टाइम पे ऑब्वियसली यू गाइस सपोर्टेड अस अ लॉट क्योंकि एक्सेल इज द वेरी बेसिक थिंग व्हिच एवरीवन यूजेस. तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारा टाइपो एरर होता था, ह्यूमन एरर्स होता था. ट्रांजैक्ट यूज करने लगे तब से वो जो मतलब अवॉइडेबल एरर्स है दोस हैव बीन एलिमिनेटेड. हमने क्या है कि वो मतलब ट्रांजैक्ट के साथ ही जर्नी चालू किया था एंड सिंस बिगिनिंग वी आर विद यू गाइस. तो वो एक स्मूथ जो मूवमेंट है वो चल ही रहा है हमेशा. ट्रांजैक्ट का आई मीन नॉट जस्ट बिकॉज यू आर इन फ्रंट बट एक्चुअली दैट इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस. ट्रांजैक्ट का टीम जो है सपोर्ट टीम इज वेरी रिस्पॉन्सिव.